महोत्सव उद्घाटन समावेश प्रतिभा अभिनंदन अर्पण करुछु। राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति गवेषणा और प्रतिष्ठान प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अनुसूचित जनजाति जाति उन्नयन विभाग द्वारा आयोजित तथा भारतीय जनजाति व्यापार मंत्रणालय सहयोग निवेदित जातीय जनजाति नृत्य महोत्सव आद्य संध्यारे आपण मन को अभिनंदन जनाऊँ। 3 दिन व्यापी कार्यक्रम प्रति मुहूर्त प्रति संध्या बेस उत्सव मुखर उपस्थिति आम कामना करुछु। गुड इवनिंग एंड ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द इनॉग्रल session of National Tribal Dance Festival 2022 organized by Scheduled Caste and Scheduled Tribe Research and Training Institute, ST and SC Developing Department, Government of Odisha, with the support from the Ministry of Tribal Affairs, Government of India. As we know, during these 3 days event, we will be witnessing various cultural items which will be presented by different tribes, and the artists belonging to different tribes, they have represented this National Tribal Dance Festival, and this is a moment in life to witness the cultural hub of the tribal India. आपण मन को पुणी थरे आज भव्य आसर रे अभिनंदन जणाइबा सहित स्वल्प समय मध्य आम वरेन्द्र अतिथि को आम घर में स्वागत करने जाऊँ जो उपस्थित आज कार्यक्रम उपस्थित। We are very much delighted to welcome in our midst reverend guests of the evening, those who will be taking their respective seats very shortly, and with the lighting of the ceremonial lamp this program will commence and it will go on for 3 consecutive days, and every evening we have got 10 cultural items to be represented by different tribes, and you will be witnessing very colorful presentation of our tribal dance, and these dance forms in fact reflect the culture and the cultural ethos of different tribes of India, and indeed it will provide you with a different taste, it will cater to a different taste. आमे आपण मन को पुणी थरे कहि रखिबो 3 दिन व्यापी जातीय जनजाति नृत्य महोत्सव प्रति संध्यारे बहुविध नृत्य जनजाति नृत्य आपण मान उपस्थापित हेबो एवं प्रतिटी नृत्य से संप्रदाय से जनजातिर सांस्कृतिक अवबोध को आपण मान निकट में व्यक्त करिवो एवं जहा भितरे आपण माने समग्र भारतीय जनजातिर सुंदर प्रकाश को आपण माने अनुभव करिवे जो संस्कृति माध्यम रे आमे भारतर संस्कृति को एक अनन्य संस्कृति भाव गढ़ी तोड़िबा पई प्रतिबद्ध। If unity in diversity is the hallmark of Indian culture, that will be reflected in various dance forms of Indian tribes, and we are very much delighted that dancers from different states, from different tribes, they are with us, and with their colorful costumes, with their ornaments, and with all other things, they will be alluring all of you to the dance tradition, to the cultural tradition, and that cultural tradition has been the identity of the Indian tribal dance form. पुणी थरे आज ए भव्य आसन रे आमे आपण मान को स्वागत करबा सहित आज गणमाध्यम प्रतिनिधि बंधु मान उपस्थिति को आमे साधुवाद देउछु एवं विशेष भाव में अनुसूचित जाति और जनजाति गवेषणा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सहित अनुसूचित जाति जनजाति उन्नयन विभाग अधिकारी वृंद उपस्थिति एवं सहयोग कार्यक्रम को सफल करुछि एवं आमे मध्य आशा पोषण करुछु आपण मान भली कलानुरागी जो मान उपस्थित रे कार्यक्रम उत्सव मुखर होउछि एवं समस्त विशेष भाव में यही नृत्य को आधार करी जो गवेषक मान उपस्थित रही जो समीक्षक मान समस्त उपस्थित रे कार्यक्रम सफल होगा। We take the privilege to invite the dignitaries to take their respective seats on the dais. We are very much honored to have in our midst Sri Jagannath Sarkar, Honorable Minister, ST and SC Development, Minorities and Backward Classes Welfare Minister. We have Dr. Navaljeet Kapoor, Joint Secretary, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, and we have
esteemed Principal Secretary, ST Development Department, Madam Mrs. Ranjana Chopra ji, and we have esteemed Director, ST Madam Guhapunan Tapas Kumar ji, and also we have Advisor come Director, SC/ST Research and Training Institute and Special Secretary Professor Akhil Bihari Uttan. At the outset, with this thundering applause at the outset, we would like to present flower bouquet as a token of love and appreciation to the gracious presence of the dignitaries. And we welcome our dignitaries once again with a big round of applause. As we know, every auspicious occasion commences with the lighting of the ceremonial lamp, and this occasion, this inauguration of National Tribal Dance Festival 2022 is not an exception. I take the privilege to request esteemed dignitaries on the dais to kindly light the ceremonial lamp to mark the commencement of this National Tribal Dance Festival 2022. Very good evening to all to this inaugural function of the 11th National Tribal Dance Festival 2022. Esteemed Chief Guest of the inaugural function of the National Tribal Dance Festival, Sri Jagannath Sarkaji, Honorable Minister, ST and SC Development, Minorities and Other Backward Classes Welfare Department, Government of Odisha. I, on behalf of the ST and SC Development Department, extend a very warm welcome to you, sir, for agreeing to inaugurate this cultural event despite your busy schedule. You have always been a great support for promotion of cultural activities meant for the tribals. We are grateful to you, sir, for your benign presence today. We take this opportunity to extend a very hearty welcome to Dr. Nabaljit Kapoor, Joint Secretary, Ministry of Tribal Affairs, who has always been a great supporter for the ST and SC Development Department, and in particular for the SC/ST RTI, and in all its activities ever since he joined the ministry. He has played a great role in promoting the Tribal Research Institute and the Odisha State Tribal Museum. Despite his very hectic schedule, he has been able to keep our request and has attended this inaugural function of 11th National Tribal Dance Festival. I, on my personal behalf and on behalf of the ST and SC Development Department, Government of Odisha, extend a very warm welcome to you, sir, and extend our sincere gratitude to you for your benign presence in this event. I welcome our leader, Mrs. Ranjana Chopra, Madam, Principal Secretary, under whose charismatic leadership and inspiration we have been able to organize this National Tribal Dance Festival. In fact, we have organized a number of national and state level cultural events during the year. We are grateful to you, Madam, for the inspiration and encouragement which has enabled us to organize this great event. We have with us our Director, ST Mrs. Poonam Guha, who always wants to promote cultural events pertaining to tribals, as she is a great facilitator for protecting rich tribal cultural heritage of Odisha. We welcome you, Madam, to this event. I take this opportunity to welcome to this event all the tribal dance performers of 15 states who have taken great pain to come over from far-flung places of the country to stage their exquisite tribal dances during this 3-day extravaganza. We are obliged to each one of you, and I extend sincere gratitude
to one and all. I welcome all the representatives of media, both electronic and print, who all these years have given wide publicity to our cultural events that we have organized. I welcome you all and hope that your support will continue and you will continue to give wide coverage to this event as well. Lastly, I welcome all the esteemed culture lovers who have come to witness the rhythmic tribal dances that the tribal dancers will perform from various parts of the country over the next 3 days. Before I conclude my formal welcome, I would like to state that this mega event is the 11th edition of the National Tribal Dance Festival. Initially in 2010, SCST RTI under ST and SC Development Department started its journey to stage a state-level tribal dance festival. Subsequently, from 2011 onwards, we started doing a national tribal dance festival and we have not looked back, and this is the 11th edition as I have told you. Only during 2021, due to COVID pandemic, we couldn't arrange it. This function finds a place in the state cultural calendar of the state. This year, 15 states and union territories, as I have told, are participating, and will try to expand this further in coming years and ensure participation of more states and union territories. This event is supported by the Ministry of Tribal Affairs, Government of India, under the scheme Support to TRIs, and I extend my sincere gratitude to Ministry for supporting this event. This year the event is organized and 30 tribal dance forms will be performing, and we have more than 600 tribal dancers who will take part in the tribal dance. I again welcome everybody present here to this inaugural event of the 11th National Tribal Dance Festival, and hope that this will be a landmark event which is a part of the celebration of 75th year of India's independence. Thank you. Bande Utkar Janam. We are extremely grateful to Advisor cum Director, SCST Research and Training Institute and Special Secretary, Professor Akil Bihari Utta, for presenting the welcome address. Indeed, we are very much privileged to have the Principal Secretary, ST and SC Development Department, Madam Mrs. Ranjana Chopra, under whose direct supervision different programs are not just initiated but are executed. And may I request you, Madam, to kindly address the congregation. Honorable Minister, ST and SC Development Department, Government of Odisha, Joint Secretary, Ministry of Tribal Affairs, Director SC/ST RTI, Director ST, senior officers from the department, the team of SC/ST RTI, and all the dancers who have come from various states of India, ladies and gentlemen. On behalf of ST/SC Development Department, I welcome all the dance troupes which have come from about 15 states and union territories from different parts of the country to this program and to the state of Odisha. I hope that you have a good, pleasant experience in the state of Odisha. This is actually, the hall now is representing the cultural heritage of our country. It is with great pleasure and privilege I welcome each one of you. I am very happy to see the tribal dancers from the northeastern states of Assam, Manipur, Mizoram, Sikkim, our neighbors Chhattisgarh and Jharkhand, the Himalayan states of Himachal Pradesh, Uttarakhand, the great Gangetic Plain state of Uttar Pradesh, our western states of Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, and our very young and small state of Goa. I welcome each one of you here to this event. In case we look at the tribal communities and dancers who are from different parts of Odisha, and we look at all of you who have come from different parts of the country, there is just no difference. The kind of dresses, the way the get-up of the tribal dancers,
and everything is so similar that one feels very fortunate to see this kind of a gathering where we have tribal communities from so many states. As Dr. Ota was mentioning, this is the 11th edition, and after COVID, this is the first major national festival that we are organizing in the state of Orissa. So it is very good to see everyone sitting in this hall without the masks, and we are really looking forward to a very good scintillating cultural program. Our small children who are studying in residential school of Bhubaneswar are also here to witness this grand event. And as Honorable Minister was telling me, that this is also a unique opportunity for our young boys and girls who are studying in schools, in residential schools in Orissa, to actually witness the dance forms of different states of the country. And I also wish that you have a very pleasant stay, you enjoy your stay in Orissa, and that you will take back fond memories of the state. The beauty of this National Tribal Dance Festival also is to commemorate the rich tribal heritage of our country. For tribal communities, the dance, music is not only a part of culture, it is a part of their livelihood, it is a part of their day-to-day living, it is an intrinsic part of the community life that they are having. और आप में से जो हिंदी भाषा समझते हैं, आपको मैं हिंदी में भी स्वागत कहना चाहूँगी। राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से बहुत हमारे जो भाई और बहनें आई हैं, तो आपका उड़ीसा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करूंगी कि आप यहाँ पर आपका बहुत स्मरणीय अनुभव हो और आप जब वापस अपने राज्य को जाएं, आप उड़ीसा के विषय में बहुत एक अच्छी कल्पना लेके यहाँ से जाएं। मैं एक बार और आप सबका स्वागत करती हूँ उड़ीसा राज्य में ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तरफ से। धन्यवाद। We are extremely thankful to Madam Mrs. Ranjana Chopra, Principal Secretary of the Department. We are very much delighted to have in our midst Dr. Navaljeet Kapoor, Joint Secretary, Ministry of Tribal Affairs, Government of India. He is a man who is particularly infatuated with Odisha and with the people of Odisha. We are very much delighted to have you in our midst, sir. May I request you to address the congregation. Honorable Minister Shri Jagannath Sarka ji, Principal Secretary, Ranjana Chopra ji, Poonam Gogha, डायरेक्टर AB ओटा जी, डायरेक्टर TRI, पूरे भारत से 600 से ज़्यादा जो ट्राइबल परफॉर्मर्स आए हुए हैं, उन सब का मैं 11th एडिशन ऑफ नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल पे स्वागत करता हूँ। ये फेस्टिवल इस साल इसलिए भी खास है क्योंकि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 इयर्स मना रहा है और उड़ीसा ने स्पेशली जो आज़ादी के अमृत महोत्सव पे प्रोग्राम किए हैं, जैसे पीछे क्राफ्ट्स मेला था, उससे पहले PVDG फेस्टिवल था और ये जो एक नेशनल डांस फेस्टिवल है, ये अपने आप में इसलिए स्पेशल है क्योंकि एक तो फिजिकली जैसा बताया कि हो रहा है और इससे पहले लास्ट ईयर वर्चुअल फेस्टिवल्स कर रहे थे, बट जो सब लोग आते हैं एक अपनापन सा लगता है, डिफरेंट कल्चर्स में लोगों से मिलना, बात करना, उनसे शेयर करना अपने एक्सपीरियंसेस, तो इसलिए ये एक स्पेशल होता है। 12 मार्च 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुरुआत की थी दांडी से, और उसके बाद से मंत्रालय लगभग 200 के करीब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर चुका है, जिसमें एकलव्य स्कूल की फाउंडेशन लेइंग स्टोन, ट्राइबल मेलाज, फिर क्राफ्ट्स मेला, आदि महोत्सव, डांस फेस्टिवल, सिकल सेल से रिलेटेड जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन कैंप, इस तरह के काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं। यहाँ पे भी 30 ट्राइबल, जैसा रंजना जी ने बताया, हमारी विविधता इससे पता चलती है कि उड़ीसा की ही कम से कम 11 टीम्स आई हुई हैं और 750 जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, 1500 से ज़्यादा डांसेस जो इंडिया में हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स पे, चाहे
वो हार्वेस्टिंग का हो, चाहे वो मैरिज सेरेमनी हो या कोई भी त्योहार है, उस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं, तो जनजातीय मंत्रालय TRIs के साथ मिलके 75 डांसेस जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हैं उसको भी हम डिजिटली डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और एक आदि प्रसारण पोर्टल और एक पोर्टल जिसपे ये आप लोगों का पूरा डेटा जो होगा वो भी डिजिटली अवेलेबल होगा, और साइमल्टेनियसली ये जो प्रोग्राम है पूरे इंडिया में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस मेरे को पता चला कि डिफरेंट जगह से जो आए हुए हैं। अभी मैं पीछे उत्तर प्रदेश गया था, वहाँ पे भी पता चला कि जो ट्राइबल वहाँ के PBTGs हैं तो उनका भी डांस यहाँ पे है, और उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से जो टीम्स आई हुई हैं, मैं फिर दोबारा से आप सबका स्वागत करता हूँ। और ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो टीम्स बेस्ट टीम्स होंगी तो अगले साल से हम लोग उनको दिल्ली भी ले जाके, तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट हाउस में या जो हमारा 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है तो इसमें भी हम आप लोग इनफैक्ट कुछ दिन में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में एस्टेब्लिश होने जा रहा है। तो मैंने ओटा जी को भी और जो हमारे पूरे इंडिया के TRIs हैं उनको कहा है कि आप टीम्स को आइडेंटिफाई करें ताकि जो हमारे मंथली प्रोग्राम्स होंगे उसमें ये टीम्स आएँ और रिप्रेजेंट करें। जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है, उड़ीसा हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है, और मैं माननीय मंत्री जी को बता रहा था कि मैडम का और ओटा जी का इनफैक्ट दिस इज़ अ स्पेशल स्टेट टू अस, ना सिर्फ फिजिकल परफॉर्मेंस में बट इतनी सारी इनिशिएटिव्स इस स्टेट ने लिए हैं, चाहे वो जीविका मिशन हो, सुविद्या हो, चाहे एकलव्य हो। इनफैक्ट जो TRI उड़ीसा इज़ आवर बेस्ट TRI, और डॉक्टर ओटा को हम लोग बाकी TRIs के मार्गदर्शन के लिए भी हम इनको हमेशा यूज़ करते रहते हैं। बहुत समय ना लेते हुए आप लोगों का मैं फिर तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ, और दिल्ली में उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी कुछ टीम्स को हम दिल्ली में मिलेंगे। धन्यवाद। We are thankful to Dr. Nabaljit Kaur for his encouraging words, and particularly for his interest in Odisha, and for his gracious presence and for his inspiring words. Once again we extend a cordial welcome with a big round of applause. Now, every auspicious occasion with the National Tribal Dance Festival, we look forward to having different publications from RTI released, and this evening we would like to request our esteemed guest to release a few publications published by SCST RTI. The first one is Koli, that will be released by our esteemed chief guest and other dignitaries in the dais. Koli, the publication from SCST RTI, is being released by our esteemed guests. Another publication from SCST RTI. Indeed, we are short of words to extend our heartfelt gratitude to the gracious presence of the esteemed guests, and for their inspiring and gracious presence, we would like to felicitate, and I would like to request Principal Secretary Madam Ranjana Chopra ji to felicitate Honorable Minister, the chief guest of the occasion, with a shawl and memento. Small as our gifts are, but our gesture is warm and honest. This is Dangariya shawl, and it is
been presented to the Joint Secretary, Minister of Tribal Affairs, along with this memento. With this memento and the typical shirt, we felicitate our esteemed guest. And I would like to request the advisor cum director, Professor Akadhir Utaji, to present a memento. Now, Principal Secretary Madam is felicitating the director with a memento, and also I take the opportunity to request Professor Akadhir Utaji to reciprocate by presenting a memento to Madam, and also to Madam Gohapunam Das Tapas Kumar, Gohapunam Tapas Kumar Madam, Director Exclusively, given a memento. We would like to welcome Honorable MLA Raigada, who is with us. Makaranda Muduli, Honorable MLA Raigada is with us. May I request you, sir, to kindly be escorted into the dais. Once again, with a big round of applause, we welcome Honorable MLA Raigada. So before I request our Honorable Minister, the Chief Guest of the occasion, I would like to request, and with a flower bouquet, we welcome Honorable MLA Raigada, and I would like to request you, sir, to kindly speak a few words. आज राज्य स्तरीय तथा जातीय स्तर आमर जनजाति नृत्य प्रतियोगिता आमर रायगड़ा एसटीसी रिसर्च डिपार्टमेंट आज आयोजन करछंती आमर डायरेक्टर अकाशा एवं आज मुख्य अतिथि आमर केंद्र आछंती आमर कपूर जी आमर आदरणीय राज्य अनुसूचित जाति जनजाति जनरल शाखा महोदय आमर सेक्रेटरी रंजन चक्र मैडम एवं डायरेक्टर एसटीसी पूनम मैडम अटा सार एवं समस्त विभिन्न अंचल आसथिबा आदिवासी प्रेमी आदिवासी समाज को आदिवासी संस्कृति को आदिवासी भाषा को आदिवासी जीवन जीविका को भल पाउथिबा समस्त बुद्धिजीवी समस्त को आज आम गर्वित राज्य माने जातीय स्तर ये जो जनजाति कार्यक्रम एसटीसी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट सहयोग आम रायगड़ा रवींद्र मठ आयोजन करा तेणु आपण मन अवसर में आपण हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। जहाँ बंधुगण आज राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार आदिवासी मानकर जो सामूहिक विकास पाई अहरह संग्राम जारी रही गवेषणा माने चली तेणु आज भी आमर आदिवासी समाज आज भी विनयक पृथ्वी में बसवास कर आज भी सरकार पाखे आइडेंटिफाई हो पारना से राज्य सरकार केंद्र सरकार अहरह संग्राम चलाई से केमती मुख्य धारा सामिल करने सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार अनेक योजना कर सारी माननीय मंत्री माननीय विभागीय अधिकारी समस्ते आज भी जिते भी योजना विभिन्न माध्यम पहुँचुची आज भी आम जोटा कि विपत्तकामी अवस्था आम भी अच्छु आज भी किंतु लगुच लेट हो आगामी दिन निश्चय सरकार प्रचेषा अच्छी जेहतु ट्राइबल माने कौन आप भल कर जानते आदिवासी कौन आदिवासी मैंने लाजुआ से मैंने आज भी क्यारेक्टर आदिवासी कौन कह चरित्र संपूर्ण भिन्न
आज भी आप देखिए गाँ गहली सार्ट पैंट पिंधा आज भी से गोटे अलग टाइप विचार जेनेटिक कैरेक्टर से बोधे लेट हो मुख्यतः आज भी केते चेष्टा केते योजना केते कले आम जो गति को से गति जो अवस्था आम समाज माने से अवस्था अच्छी तेणु आज गोटे सुंदर कार्यक्रम आ सरकार जहाँ को लुकाय प्रतिभा को आज उपस्थापन राज्य केन्द्र स्तर उपस्थापन कर विभाग मंत्री महोदय मंत्री परिषद को अधिकारी को आउ केन्द्र राज्य जो नेतृत्व वर्ग अच्छा आपण जो आसुच्च समस्त स्पृहा अच्छी आम आशीर्वाद आपण मनकर सामूहिक सहयोग आगामी निश्चय आम जो व्यक्त कोरापुट जिले में तथा आम ओडिशा रे आज भी स्वीकृति प्राप्त होना बहुत आदिवासी आज भी रही जाइछन आज भी नॉन नोटिफाइड आदिवासी मैंने आज भी इंग्लिश ही ना भी आज सरकार चेष्टा कर अटकी जाइए अनेक योजना हो 370 द्वारा उठीगला आपणकर 3 तलाक भी उठीगला आदिवासी मैंने कहीं अवहेलित से केन्द्र विभाग जो आमिडिएट ओडिशा जिते नन नोटिफाई होती तुरंत दृष्टि नीति अनुरोध कर तरफ राज्य सरकार तरफ विभाग तरफ ध्यान देवे आ जो मैंने रही जाए आना आनिक से मुख्य सामिल कर मोर आज नवेदन तेणु जहाँ बहुत खुशी मुझे आप मान्यवर विधायक रायगड़ा श्री मकरंद मुदुली महोदय को कृतज्ञता जनाऊँ एवं श्रद्धा और सम्मान स्मारकी को वहन करुवा एक स्मृति फलक प्रदान करी आम अभिनंदन जनाऊँ मंच में निवेदन करूँ मान्यवर मंत्री महोदय को मान्यवर विधायक महोदय को ए मंच में एक स्मृति फलक प्रदान करी अभिनंदन जनाइबा पाई ऑनरेबल मिनिस्टर श्री जगन्नाथ सरकारी Now I would like to request Honorable Minister to kindly address the convention. जातीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2022 ये मंचर उपस्थित मंचासीन अतिथि माननीय विधायक रायगढ़ एवं भारत सरकार जनजाति व्यापार मंत्रालय युग्म सचिव डॉक्टर नवलजीत कापुर महोदय आम विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा महोदया विभाग निर्देशिका श्रीमती गुआ पूनम तापस कुमार महोदया एवं SC ST आरटीआई उपदेष्टा तथा निर्देशक डॉक्टर एबी अत्ता महोदय गणमाध्यम प्रतिनिधि माने सर्वभारी स्तर प्रतिनिधित्व करथिबा आम जनजाति समाज कलाकार बंधुगण सुधीवृंद विभाग समस्त अधिकारी दर्शक बंधुगण मु गर्वित जे संस्कृति को सार्वजनिक करने जो सुंदर प्रयास चली जहाँ माननीय विधायक कहते जे लुकायित प्रतिभा रही जो हिडन टैलेंट जहाँ अच्छी सर्वांतीकरण करने समस्त आगे प्रस्फुटित करने जो प्रयास चली तेणु विभाग को मु बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी एवं आमर जो विभागीय सेक्रेटरी महोदय कहते कि जे ओडिया रे कहले भी किसी लोक बुझंती ना तेणु आपण भाषा रे टिके 2 पद कथा कहतु बोली
तेणु निश्चित भाव आज जो जातीय जनजाति नृत्य महोत्सव ये वयानी हेबेलो को कलाकार जो आईका मोर निजर भाषा कंध भाषा प्रतिनिधित्व कर मोर ट्राइब हूँ कंध ट्राइब ओडिशा सरकार माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जो प्रकार भाव में जो प्रत्येक स्तर का जो लोकायत प्रति माने स्वर्गीय कोलकाता कहूँ कि अन्य जिनसटा जो प्रकार भाव में जो लोकायत प्रतिभा माने हेबेलो को सामना था जो प्रचलित की कि बहुत बहुत धन्यवाद दिए तेणु निश्चित भाव महाभारतीय जनजाति सहित विभिन्न नृत्य कला को एकत्र करी गोटाए मंच आमे समस्ते प्रदर्शित करुचे एवं विभिन्न समय सारा भारत वर्ष नुहे सारा विश्व रे कबलित कोरोना कटकणा जो जनजाति कलाकार मानकर प्रदर्शन कराकर आमे गत वर्ष किंतु सुजोग पाई नथिलु खाली आमे नुहे समग्र भारत वर्ष भी यह कबलित थिला एवं विश्व भी कबलित थिला एपरी एक मंच जो कि सारा भारत रे जनजाति नृत्य गीत रे असर हुए पर्यटन ढंग रे परिवेशन कराई आम विभाग यही कार्य सुचारू रूपे संपादित करुछि एथिपाई आमे गर्वित एवं विभाग मध्य गर्वित माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा जनजाति प्रति थिबा दरद सेमानंकर सामाजिक संस्कृति अर्थनैतिक विकास पाई आंतरिक जोगु आमे एपरी सांस्कृतिक भावना आदान प्रदान परिवारे आमे समस्ते सक्षम हो पारुछे कोरोना महामारी जो आम नृत्य संगीत कला परंपरा प्रदर्शन दिमे जाइथिला जहाँ आपण मानू आमर विभाग सचिव महोदय कहते जहाँ हो समस्त मुहरे आमर जो मास्क टिके दिमे जाइए बहुत धन्यवाद साधुवाद जनाऊँगी इपरी भाव में कोरोना टिके दूरे जाऊ विभिन्न समय आम समस्त धारा प्रवा कथा निकट अतीत आम आदिवासी मेलार श्रृंखला भाव भी विभाग एवं समस्त सहयोग संपादन करें भी देशर विभिन्न कोण अनुकोण भी भाग नहीं आमर एसएचजी महिला माने एवं समस्त सहयोग संपूर्ण हो पारे पुनश्च जनजाति नृत्य समारोहर आयोजक आमपाई आह्वान होते सुचारू रूपे संपन्न कराई भिन्न भिन्न धारा भिन्न भिन्न परंपरा शैलीर एकत्र समागम हेले नूतन उत्साह सृष्टि हुए यहाँ आम समस्ते जानीचे विभिन्न लोकर विभिन्न मत भाषा डांस समस्त पाखे आम जमीक भावर आदान प्रदान हो पार नुआ परंपरा सृष्टि हो पार आत्मविश्वास आसे भाईचारार बजाय रहे यही जातीय जननृत्य समाजतार एक झलक मात्रे आपण मैंने यार सुजोग नियंतु आमे परंपरा को सम्मान देउछु बजाय रखा तेणु मु आज यही उत्सव आमंत्रित कर समस्त अतिथि कलाकार एवं जनसाधारण को समस्त को धन्यवाद दे मोर वक्तव्य शांत करुच्ची वंदे उत्कल जननी नमस्कार। जातीय जनजाति नृत्य महोत्सव मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्रीयुत जगन्नाथ सरकार महोदय निकट में आम कृतज्ञता अर्पण करूँ एंड बिफोर वी conclude this session and to move on to the cultural item, I would like to request esteemed Director ST Madam Guhapunam Tapas Kumarji to present customary vote of thanks.
Namaskar. On the occasion of the 11th edition of the National Tribal Dance Festival, I take this opportunity to propose a vote of thanks to all river dignitaries for their dedicated efforts and gracious presence on this occasion. To begin with, I would like to thank Honorable Minister, ST and SC Development Department, Government of Odisha, for his gracious presence and his excellent speech, which is a very important marker on this occasion because having come from Bisamkatak, Muniguda in Raigada district, all our friends from the Dongriakan communities would have revered it. And as ma'am was just mentioning, we having about 22 tribal languages. This is a very symbolic marker on this occasion. So thank you sir for your gracious presence and for that very nice speech. आपनोर अभिभाषण पे सर बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँगी एवं आपनोर ग्रेशियस प्रेजेंस पे धन्यवाद सर. I would like to thank Principal Secretary Srimati Ranjana Chopra for her dedicated efforts, for her leadership on all occasions. She has been a friend, philosopher and guide, and she has been carefully scripting history by doing one scheme after another, and this is only an epitome of success that we have actually got a chance to showcase our cultural heritage through this national tribal festival here in Odisha. So I take this opportunity to thank her in particular. Ma'am, thank you so much ma'am for guiding us all along. Thank you ma'am. I thank Honorable MLA Raigada, Shri Makaran Mudli ji, for having graced this occasion. Sir, आपनो अभिभाषण बहुत ही मूल्यवान अच्छी एवं आपनो जा कहले निहायती भाबरे आमे एज अ डिपार्टमेंट एंड एज अ सोसाइटी आमे हमरो जे आदिम जनजाति भाई भाउनी मानकर जे विकास अछि सेटा प्रति आमे समस्ते चिंतित अछु. आमे प्रत्येक जन आमे चेष्टा करूछु कि परि आमे तांकर एजुकेशन तांकर लाइवलीहुड को आवरी सदृढ़ करिवु एवं आपन मानकर भले आवरी हमरो जनप्रतिनिधिंकर जे अभिमुख्य अछि आपनर जे एक्सपीरियंस अछि सेटा को नै कि हम निहायती भाबरे हमरो आदिम जनजाति भाई भाउनी मानक पई गोटे बहुत भलो स्कीम हम डिजाइन करू छु एवं आपनर एठी प्रेजेंस पई आपन को मु बहुत बहुत धन्यवाद जनाउ छी सर. धन्यवाद. Dr. Navaljeet Kapoor has been a very important figure for us, especially on all occasions with respect to the schemes that we have been doing, whether it is Article 275 or whether it is SCA 2 or TSS now, the SCA 4TD, which is now the Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana, including Forest Rights Act, and also he has been monitoring religiously the EMRS in the state of Odisha and the TRI also. Sir has been gracious enough to also attend one of our workshops in the morning, and he has been very keen to see to it that one of the very important online platforms of the department of the Ministry of Tribal Affairs is also given proper shape to by our department. And for this, I take this opportunity to thank you from all of us here for having graced this occasion and for having guided us in every sphere, sir, and we will see to it that we implement all our schemes and policies well. Thank you for your gracious presence, sir. Thank you so much. Director SCST-RTI and Special Secretary Dr. A.B. Ota does not need introduction. We are indebted to him for his decade-long service in the history of this institution and also towards the history of this department, where he has been actually able to put forth these kind of lively events to mark the occasion, to mark our cultural heritage, whether it is the Adivasi Mela, whether it is the National Craft Mela some days back, and today here we have 15 states from across India under one banner in Odisha because of his concerted efforts towards the National Tribal Dance Festival. And we have actually been, it has been our great privilege to have him with us. He has actually been guiding us throughout on various aspects related to tribal lives and livelihoods. And I take this opportunity again to thank you, sir, in particular for this event, but also for all those years of dedicated service that you have actually given. Thank you so much, sir.
I thank all senior officers from the department who have come here, and all of us together we are trying to do some good work for our tribes, and wherever there are gaps, as a civil society I request everybody concerned to please come together and join hands in tribal development. I thank the dedicated teams from the ATLC and the SC/ST/RTI for having put together this beautiful event. Thanks to their concerted efforts, they are the people behind the scene, but they have a big role to play. Thank you for this dedicated effort. Thanks to all the states, the 15 states who are participating. आप सबको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनाती हूँ. आप लोग यहाँ पे बहुत महफूज और बहुत खुश रहेंगे. ये इस privilege से मैं आपको यहाँ पे on the one hand I welcome you, on the other hand I also extend a vote of thanks on this occasion. आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत भी जनाती हूँ. आप लोग यहाँ पे बहुत खुश रहिएगा. ये 3 days का जो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल है, इंडिया में उड़ीसा एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है एज फार एज ट्राइब्स आर कंसर्न, बिकॉज 62 ट्राइब्स एवं 13 पीवीटीजी कम्युनिटीज हम लोग भी यहाँ पे हैं. और आप लोग के साथ, आप लोग जो अपने साथ ट्राइबल कम्युनिटीज के कल्चरल परफॉर्मेंसेस लाए हैं, तो वो निहायती लाइक आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मिनी इंडिया वास कर रहा है. तो आप लोग यहाँ पे आने की वजह से आई रियली एक्सटेंड लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. Have a pleasant stay here and may the best person win, but I think all of us together we win in any occasion. And I extend a lot of thanks to also vibrant media here. They have actually been covering all our events very diligently. Thank you. And to all the audiences here from across the state and across the country, thank you for your gracious presence on this occasion. Please let us make this event a historic one. And because we mark the 75th year of India's independence under the Azadi Ka Amrit Mahotsav, let's come together and welcome each other's cultural heritage and celebrate our rich diversity. Dhanyavad. Jai Hind. Once again, extending a hearty welcome to the dignitaries and the dais. I would like to request them to be kindly escorted to the front row and to witness the cultural program to follow. Thank you, madam. Thank you, sir.